डिफरेंशिएटेड व्यू लेके आते हैं टेबल पे। आज मैंने उनका नोट पढ़ा और इसीलिए मैंने जमाल मिकलाई साहब को फिक्स करवाया अपने शो के लिए, जो इस समय हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। जमाल, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ईटीनो स्वदेश पे। आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट पे है, हमें सुनाई नहीं दे पाया आपका व्यू। नहीं, म्यूट हाँ, पे अभी नहीं, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, गॉट इट सर, गॉट इट। सो जमाल, आपका जो नोट है काफ़ी डिफरेंशिएटेड लगा मुझे, क्योंकि ज़्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस लोग इसी बात पे पकड़ के चल रहे हैं, इवन सेंट्रल बैंक फॉर दैट मैटर, टिल्टिंग की शायद इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है। लेकिन आप ये कह रहे हैं अपने नोट में देर आर रीज़न टू बिलीव कि ये इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट ना हो, और ऐसा अगर नहीं हो, ऐसा केस हो कि इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट नहीं है, तो हमें एलिवेटेड इन्फ्लेशन के साथ रहना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऊपर जाने की डर है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना। आप बताइए, आप ऐसा क्यों लगता है आपको कि इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट, इन्फ्लेशन का बढ़ना ट्रांजिएंट नहीं है? जो मैं कहता हूँ, आई हैव बीन इन मार्केट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बुक्का हूँ। और जो बात है इसके, पीपल इन लाइफ एंड सर्टेनली एनालिस्ट्स एंड मार्केट्स, उनको जो what is good for them is what they want to believe. It's very hard to be objective. About ये inflation के बारे में, for over a year, I have been feeling that something is not right, And if you see now, कितने चीजें हैं. First is, of course, the fact that there is supply chain problems, etc., दुनिया में. Correct? Second is abhi ye fourth wave, fifth wave, jo kuch, that will again make the supply chain problems worse. Right? Third, what is very interesting, ye jo, as a result of this pandemic and the lockdowns, certainly in the rich countries, people are saying that mujhe kaam nahi karna. Meaning we've made enough money, we want to change our life, because this thing has changed the way people look at life. So what they are finding overseas is that they are not able to get people. In the West, at least, the biggest problem for inflation is wage inflation. And we are now beginning to see that, right? Then chautha hai ki China, right? For 20 years, China has actually helped the world keep inflation low. China price, everything is cheapest. Wo badal gaya, China has changed their plans. They do not want to be infinite exporter anymore. They want to improve their way of living. There are several. Most important, of course, कि भाई इतना पैसा है market, as we all know. Everything is going up, right? Now, and this has been the problem since 2008. In fact, even before that. मेरे ख्याल से देखो, you cannot have. I love to go to parties. That is my main job. But I also know that, Baba, you cannot party without a break. And if you just drink too much or party too much, today or tomorrow there will be takleef to hone wala hai. So mere khayal se this party is coming to an end. And if you look, in my article, which I'm glad you read, I gave an example from the 70s when there was the oil embargo. Oil prices went up, inflation went up. Volcker moved interest rates very high. Inflation came back down. Something else came. It took 10 years, right, from 73 to 83 for inflation to come back down. Now, of course, it is a different world. Pura alag dunya hai. And, inflation is not going to 15%. But jo baat hai, we have not seen. It has been 2-3% for years, at least in the West. Right? Years meaning decades. So Jamal, right. जमाल, आपने बहुत अच्छी बात बोली, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम व्यूअर्स के लिए डिफरेंशिएटेड व्यू टेबल पे लाएं, और क्योंकि सो दैट दे कैन प्राइस इन देयर रिस्क एंड अपने पोर्टफोलियोज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। तो आपने जो पॉइंट बोला कि पार्टी हैज़ लास्टेड लॉन्ग एंड हेल्दी है कि अगर पार्टीज के बीच में ब्रेक्स हो और हॉल्ट्स हो, तो ये जो हॉल्ट की बात कर रहे हैं आप, ये हाउ लॉन्ग कैन दिस हॉल्ट बी, फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स? Sir, no one can forecast it. I may be completely wrong, right? But what I feel the problem is, see, I actually wrote this in August.
that if the central bank, if the Fed does not start doing something now, meaning then, one day markets will realize, hey, these guys are behind the curve and it will start to futter. Now that is what looks like it's happening now. So in a way, I feel it's too late for them to actually fix things. So I think this correction we're saying, I'm also wondering, I've got money in the market, and I've got money on the side. Should I put it in more or wait? I think we should wait a little while, because it's fallen sharply. It's recovered today, thank God. But mere khayal se it is not well. The system is not well. Very and nice, it is sir. not a matter now of just taking an aspirin. I think now it may take some Right. time for us to recover those highs. राइट मिस्टर मैकलाई, बहुत ही शानदार व्यू आपका. विल स्पीक अगेन आगे चल के, थोड़े और डेटा पॉइंट्स आने चाहिए. थैंक्स वेरी मच. ये बहुत ही डिफरेंशिएटेड व्यू टेबल पे लाने के लिए कि मैक्रो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि ये पार्टी थोड़ा हॉल्ट कर गई है और इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट हो सकता है ना भी रहे और एलिवेटेड रहे लंबे समय तक. इसलिए ब्याज दरें बढ़ सकती है और मार्केट्स नर्वस रह सकते हैं. इसलिए केयरफुली अपने पोर्टफोलियोज को रन करिए.